Good afternoon. In the first video clip of mine, we have seen in EPC paper counseling and guidance what we mean by counseling and what we mean by guidance, and in the second part, and how we have the two terminology we are using it interchangeably, but they don't mean the same thing. They are so different. One is निर्देशन, another one is परामर्श. So निर्देशन और परामर्श एक ही नहीं है. जो हम लोग एक ही प्रकार यूज करते हैं हमारे जीवन में, वो एक ही नहीं है. और दूसरा क्लिप में हम लोग देखे कि काउंसलिंग क्या नहीं होता है. न काउंसलिंग का अर्थ हम लोग समझ लिए, इसलिए सेकेंड वीडियो क्लिप में देखे हैं व्हाट काउंसलिंग इज नॉट. वो काउंसलिंग क्या चीज नहीं है बोलकर हम लोग देखे. तो दो वीडियो हम लोग देखे हैं जिसमें व्हाट इज काउंसलिंग देखे हैं और व्हाट इज नॉट काउंसलिंग देखे हैं. अभी तीसरा इसी स्मॉल क्लिप में हम लोग देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग. वी कैन प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग. नाउ देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल एंड वेरी स्पेसिफिक प्रिंसिपल. जनरल प्रिंसिपल साधारणतः जो सिद्धांत को हम लोग फॉलो करते हैं, और दूसरा में वेरी विशेष सिद्धांत. नंबर 1 सर्वसाधारणता जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत, दूसरा विशेष सिद्धांत. इन जनरल प्रिंसिपल we have got a few things to follow. What are the siddhant? Number 1, there should be privacy. The counselor and the counselee have a interactive context or situation और पर्यावरण जहाँ पर ये दोनों के बीच में प्राइवेसी रहना चाहिए. प्राइवेसी माने जैसे जिस प्रकार रूम में बैठे हैं, जिस प्रकार कमरे में बैठे हैं, वहाँ पर सब कुछ सुविधा हो, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आना जाना नहीं करता हो, और कोई आपकी बात को और आप दोनों की बात को सुनता हो, उस प्रकार नहीं होना चाहिए. और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होने की जरूरत नहीं है. तो इस प्रकार हम लोगों को देखना पड़ेगा. प्राइवेसी होना चाहिए. I feel comfortably free to share and the counselor is comfortably free to listen to me. The second one is take sufficient time. दोनों को sufficient time लेना चाहिए. यहाँ पर समय का निर्धारित नहीं है. हम आधा हाफ एन आवर में कंप्लीट करेंगे और आधा घंटा में कंप्लीट करेंगे, उस प्रकार कोई सीमा नहीं है. जैसे उसका मन में, दिल में उनको लगता है, उस प्रकार शेयरिंग चलना चाहिए. इसलिए समय का सीमा नहीं रहना चाहिए. तीसरा है ये दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी. जैसा हम लोग आगे ही देख चुके हैं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी इज द हॉलमार्क ऑफ दिस काउंसलिंग process. If there is no secrecy maintained, if there is no confidentiality maintained, then that person will not feel comfortable to come and share with you, and comfortable to feel with you, and comfortable to interact with you. So this confidentiality has to be maintained at whatever cost and whatever circumstances. That should not be leaked out to anybody. Even your headmaster, that you are a counselor and you are working in a school and the principal is asking about the child, and you should not be able to tell about the child to the headmaster or the principal. If you tell little that you are going against the professional ethics, so you should not violate the ethics, or that's a sacredness that you maintain. So this is the third one is very 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 important in our lives, that हम लोग को जितने ही सीक्रेट है, जितने ही उनका प्राइवेट लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको शेयर नहीं करना है किससे. नंबर 4, दैट कंडक्ट द डिस्कशन इन अ हेल्पफुल एटमॉस्फियर. नाउ क्या करना है, दैट वहाँ पर डिस्कशन चलता है, इंटरेक्शन चलता है, उसको एक दूसरे की मदद करने लायक होना चाहिए. कन्फ्रंट नहीं होना चाहिए. तो काउंसलर कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो थ्रेटन ही नहीं करना चाहिए. इसको नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा, उस प्रकार नहीं है. उसको धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण से
इंफॉर्मेशन जानना है, उनके दृष्टिकोण से सब कुछ ही हम लोगों को आगे लेना चाहिए. सो दैट हैव दैट हेल्पफुल एटमॉस्फेयर. एंड देन द सिक्स्थ वन इज कीप इट सिंपल. Let the interaction be in a very, very language that mutually both of you can understand. You understand, I understand the same language. We will not use a complex and compound sentences. Not required. Because simple thing can be narrated in a simple manner. That has to be done. So it is simple language should be used. And the seventh one is first things first. First things first. What was the sequence of the incident that happened? Don't go first incident this was there, then jump and sort of skip the thing and go to the last incident. No, it cannot be. You just keep the sequence of the way the things are happening in the counseling one by one. Otherwise, there's a lot of confusion. So first things first, order of events that has happened in life, that is happened. Then ask the eighth one is the seventh, eighth one is ask again, say it again. Suppose the counselor is saying something, you can say it again to the counselor. Did I get you this way? Did you say this one? Did you say that you wanted your father to love you so much? Wanted father to care for you, wanted your mother to care for you, affection. Did I get you correctly? Clarify. The counselor has to clarify. You cannot take it for granted. You cannot assume things. You cannot presume. So get it clarification. And the last one is use available visual aids, flip charts. Chart paper can be used, or pen and pencil can be used. Suppose the counselor is finding it difficult to express it. Ask the person to put a diagram, picture form. It can be expressed. So this is a general principle that we have to follow. Now, I also talked about this is a general principle. Now let us go to the specific principles. Now, specific principles, I will give you 6 of them. There are more, but you could as well look into other sources or other principles. Principles of acceptance. Number 1, principles of acceptance. Here, the mutual acceptance of each person is very important. That you accept totally the counselor's way of proceeding, and the counselor should accept totally the way of counselor's proceeding. Second one is principle of respect for an individual. एक दूसरे को सम्मान और आदर देने का सिद्धांत. एक दूसरे का आदर करना है. Counselor has to respect counseling. Counselor has to respect. The third one is principle of thinking with an individual. ये तो एक दूसरे के साथ सोचना है. उसके साथ सोचना है. ये क्या चीज है? जैसे वो सोचती है वैसे ही आपको सोचना है. आप जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचना है. तब आप लोग प्रॉब्लम में घुस सकते हैं और उसको देख सकते हैं. तो इसलिए get into the shoe of the other person. Get into the shoe of the other person to understand that problem. Number 4, principles of permissiveness. Now here the counselor should not take it for granted and started saying things or asking things. No, the counselor has to get the permission of the counselee in order to get a particular information. Suppose you say that the counselee is coming and crying and you wanted to console her. Will you ask her, can I hold you for a while as you cry? Can I hold you? Ask permission. If the counselor doesn't say, and you cannot hold that counselee, presuming that the permission is granted to you. No. Number 5, principles of learning. Here both are learning. It's a mutual learning. It's enriching learning. It is tremendous experiential learning that makes the person better. Number 6 is principle of consistency. What you say, what you stand, what you believe is today, tomorrow is the same. We cannot change it. We cannot. So principle of consistency is that
in all circumstances, given circumstances, you are remaining the same with your own belief, with your own thing, unless otherwise the other belief is seem to be better. Okay, so you have seen the principles of counseling in this clip.